Namaskar, Namaskar, Suprabhat, good morning, and welcome back to my channel, or welcome if you are new to my channel. I am Sneha Kormukar Ghosh, and it's 7 a.m. in the morning. So, the first thing that I do is I love having black coffee, but excess of anything is not good. So, what I do is that I have coffee, black coffee, normal water में. You can have it in chilled water also. 1 liter chilled water works best for this, but if you want to skip chilled water, that will also work fine. Just have it with normal 1 liter water, 2 tablespoons, big scoops, like 2 tablespoons of black coffee, and just mix it well. And this is your best pre-workout drink. So I have it 3. So मैंने पहले ही बता दिया कि I do not focus much on cardio workouts because I want to maintain my curves, okay? But if you want to lean down, you have to understand for yourself. Do you want to lean down? क्या आपको बहुत पतला होना है? क्या आपको curvy बनना है? This is for ladies. Then you probably will have a clear idea. तो आपको clear idea मिल जाएगा कि मुझे ऐसे workout करना है. While I'm still having my coffee, मुझे 2 चीज़ें, बहुत important चीज़ें याद आई कि why do we accumulate lower belly fat after a certain age? इसका भी एक कारण होता है. पहला तो we lose our metabolic rate as we age, okay? 25 से ऊपर you start your body metabolic rate starts slowing down. ओके, मेटाबॉलिक रेट क्या है कि आप कुछ भी खाओ, सिंपल हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊँ, कुछ भी खाओ तो वो बॉडी में लगता नहीं है, ठीक ठीक जगह पे जो न्यूट्रिशन जानी चाहिए बॉडी को मिलती रहती है, एंड बाकी वेस्ट एक्सक्रीट हो जाती है. बट आफ्टर अ सर्टन एज what happens is that our metabolic rate slows down, and that is when we start gaining most fat. So if you want to lose fat and want to have a toned body and as well maintain your curves, कि आप ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा मोटे भी ना हो, curvy भी रहो, which is trending right now. Curvy bodies are trending. So उसके लिए you need to do some resistance exercises which I will teach you in the coming videos. तो हमारे Okay, so now I'm going to show you, like you can already see I'm sweating, and this means that your workout is going amazing. Don't stop yet. And अभी मैं आपको leg raises कैसे करें घर पे, not the normal way but by using some resistance as opposed to just using your body weight, कि आपको maximum टेंशन हो ये लोअर बेली में, एंड आप जल्दी उस जगह का फैट लूज कर सके. सो यू कैन नॉट कंप्लेन कि घर के पास जिम नहीं है, घर में जिम इक्विपमेंट्स नहीं है, तो नो कंप्लेनिंग. ओके, जस्ट कीप वॉचिंग. सी, बेड तो सबके घर पे ही होगा, तो बेड का जो एंड है ना,
यहाँ पे just sit, okay, and just lie down like so, and lower body extend बाहर होना चाहिए, legs जोड़ के. Now you do the legs. अभी और भी ज्यादा टेंशन होगा आपके लोअर बेली में. 1 2 3. पूरा लेग्स, आपका जो लेग है ना, इट शुड नॉट टच द ग्राउंड. और भी ज्यादा टेंशन होगा. एंड आप 10 ही अच्छे से करोगे तो भी आपको फील होगा कि ओके, आई फील दैट देयर इज सम टेंशन इन माय लोअर बेली एंड muscles are getting tensed. This is 4 5. So you can see after the workout I am sweating. So you will know that you've gotten yourself a good workout when you're actually sweating. 30 minutes फैन AC ऑफ करके करो. मैंने पहले AC ऑन करके करा था, but I was feeling like I was not getting a good workout, so I switched off the AC, closed the windows, and now you can see and see the glow on my skin. So if you do this regularly for a week, you will see fast results. Coffee पी के, but ज़्यादा coffee you should not have, because उसके भी side effects हो सकते हैं. I will talk about it in my next video. So keep watching my channel for more home workouts. And it's so easy to lose belly fat. Like 10 days में गायब हो सकती है घर पे ही. डाइट एक अच्छा सा फॉलो करो. इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी जंक फूड मत खाओ. अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट. अगर आप समवेयर इन बिटवीन हो लाइक मी, you need to just take it easy and go easy on some foods, like less junk food, more fruits, low sodium diet. but एकदम से bland खाना भी मैं खाने को नहीं बोल रही. तो that's all for the video. I'll come up with another video about diet and everything. So keep watching, keep liking, keep sharing, keep subscribing.